topic is ischemic heart disease. Uh, Ischemic heart disease is a broad spectrum topic, and it consists of various diseases. And I have made this PPT according to me, and Srinidhi has provided me some points. So I'll start by a case discussion. So this case I have made by my own. It's not a real case. Um, it starts with a 50, 58-year-old male presented with complaints of chest pain on exertion for 6 months and shortness of breath on exertion for 4 months. And the history of presenting illness is the patient was apparently all right 6 months back, and then he developed chest pain on climbing stairs 6 months ago. Characteristics of pain are it's a retrosternal type of pain, uh, which is uh, which is for 2 to 5 minutes. The pain is heavy in heavy. It's like a heavy sensation, and radiates to left shoulder and left arm, and the frequency is increased in past few months. The precipitating factors are it precipitates by exertion and emotional stress and relieves on rest. Guys, I want to tell you all, please keep these all points in your mind. It's very important. So the second complaint is breathlessness. The breathlessness is gradual in onset and present since 3 to 4 months. It's progressive in nature, and it initially occurs during strenuous activity and later occurs with ordinary activity as well. The patient also associated with symptoms like sweating, fatigue, and chest heaviness and tightness. There was no history of orthopnea. There was no history of pain at wrist, no history of syncope, no history of fever, and no history of cough. And this negative history is important to rule out the other pathologies like orthopnea. It rules out the heart failure. Pain at rest rules out unstable angina. Syncope rules out arrhythmia and cardiomyopathy. Fever rules out any kind of infection, myocarditis, infective endocarditis, and coughs rules out any type of respiratory cause like pneumonia or pulmonary edema. Past history, the patient is a known case of hypertension for 10 years and type 2 diabetes mellitus for 8 years. And there was no previous history of similar complaints or myocardial infarction or any type of coronary interventions. Personal history, the patient is a known smoker, 20 packs here, and has a mixed diet, sedentary lifestyle, and is an occasional alcohol intake as well. Family history, there was no history of myocardial infarction in first degree relative, and there is no history of diabetes mellitus, hypertension, tuberculosis, or any kind of malignancy. On general examination, the patient is conscious, oriented, and pulse is found to be 82 per minute and blood pressure 150/90. Cardiovascular examination, the apex beat was found at the fifth intercostal space, and S1 and S2 was heard. There was no murmur present. On investigation, we'll do CBC, RFT, LFT, lipid profile, HbA1c, ECG, and treadmill test, coronary angiography, and TROP1 levels. I want you guys to enumerate any of the differential diagnoses which you can find from this case. थैंक यू मैथिली। मैं थोड़ा केस के बारे में ब्रीफ करता हूँ फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 minutes। तो it is an actually very classical case that most of us have encountered or many of you would encounter in future। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना? Yes, it's audible. Okay, It's perfect. okay. So chief complaints यहाँ पे we are mentioned that it is chest pain and shortness of breath. What is important here is as she has taken a very as she has given a history of chest pain and shortness of breath। एक चीज है कि चेस्ट पेन को आपको ठीक तरह से HOPI में मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है, एंड ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस सिम्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। Second thing that she has done correctly is that she has given the chief complaints in a chronological order। What else could have been added here? You could have added about his education, his occupation,
and Yeah, yeah. where he stays. So if it is a detailed case that you are going to present in the Demographic examination, profile is missing in this case. yes, yes, yes. So that also becomes very important. But considering ischemic heart disease as a non-communicable disease, the prevalence of non-communicable diseases and ischemic heart disease, whether it is NST or ST, everything, it is increasing even in the rural areas as well. ठीक है? And it is not Yes. like जो books में पहले दिया रहता है कि it is a urban disease या ऐसा कुछ नहीं है. It is there in both the areas. So chest pain and shortness of breath. What are the various systems that we think of when we hear these two symptoms? Anybody? Chest pain and breathlessness. What are the systems? Because whenever you hear the chief complaints, आपके दिमाग में usually systems आने चाहिए, and then the system should correlate with the history that you ask, and depending on it, you will design your negative history for ruling in or ruling out certain uh, diseases. Yes, Kalp has answered in the chat box that it can be a cardiac or respiratory. Yes, that is correct. So most important system जो हम सोचते हैं when we hear these two terms, that is chest pain and breathlessness, is cardiac or a respiratory disease. So our whole idea in taking a history is to see whether the disease is predominant cardiac or predominant respiratory. Of course, in practice, you will see that most of the disease are a mix of the two. Like all respiratory illness can progress to involve right heart, that it is causing right heart failure, or there can be both the diseases, respiratory and cardiac, in the same patient as well. But for theory purpose, or let us say in approach to the disease purpose, we have to classify it predominantly cardiovascular or predominantly respiratory. So now if you are talking about an anginal type of chest pain, तो ये OSCE में सवाल पूछते हैं, what is anginal type of chest pain? How will you differentiate it from pleural type of chest pain? Anybody? The pleuritic chest pain is more severe and um, it won't radiate like the anginal one. And Okay. So सबसे पहले you will talk about the origin. Pleuritic chest yes, pain का origin क्या है? It is the parietal pleura. So pleura. whenever we think of the lungs, it is uh, covered by two layers, visceral pleura and parietal pleura. Visceral pleura is does not have a pain supply. So even if visceral pleura get inflamed, it will not cause pain. Whereas parietal pleura has got pain sensitive nerve fibers. इसलिए जब भी parietal pleura का यहाँ पे involvement होता है, तो definitely the patient will have pain. So what are the conditions where parietal pleura can be involved? Obviously, it can be a pneumonia or a lung abscess or even a exudative kind of a pleural effusion or a synpneumonic effusion or trauma, है ना? ऐसे सब conditions में you can have pleuritic टाइप ऑफ चेस्ट पेन. यहाँ पे पेशेंट का क्लासिकल हिस्ट्री क्या रहता है? ऑन द चेस्ट मूवमेंट ही कैन हैव on the movement of the chest he can have increased pain, or on coughing he can have increased pain, or on deep inspiration the pain will be increased. So all of these characteristics are actually goes towards the pleuritic chest pain. And also as Maithili mentioned that it is a localized chest pain, does not radiate anywhere. So इस तरह से pleuritic chest pain को हम explain कर सकते हैं. Whereas what is anginal type of chest pain, classical cardiac anginal type of chest pain, यहाँ पे भी दो पॉइंट मेंशन किया है, that increase in exertion and relieving on rest or taking nitrates. This is a very classical description that is given for the anginal pain. It was given by Levine. तो Levine sign बहुत famous है cardiovascular system में. Yes. When you hold a fist in the center of the chest, and usually patient comes with this typical chest pain, that is squeezing type or constricting type of chest pain, which is predominantly in the retrosternal but can also radiate on the left side as well as in the jaw as well as in the left arm, or as our consultants say that it can be anywhere above the umbilicus. So इतना वो diffuse हो सकता है, but classical ये है कि exertion के साथ वो बढ़ता है, rest के बाद वो कम होता है. But this is true only for the stable angina. As we go ahead in this class, we all will understand what is the different type of angina. So stable angina is the one where initially patient has a pain on exertion which get relieved on rest or on taking the nitrates. So कब pain बढ़ता है? It is not only on exertion, but as rightly mentioned, it can also increase on emotional stress as well. ठीक है? So this is important because in unstable angina or a myocardial infarction, usually the consultant will ask you a question that why have you labeled this patient as having myocardial infarction just by judging by his pain?
तो पेन को देख के तुमने कैसे डिटरमाइन किया वेदर इट इज ए एमआई और वेदर इट इज जस्ट ए स्टेबल एंजाइन? देन यू शुड से दैट ओके, this patient has a resting type of pain. Even after taking nitrates, there was no relief, or even after taking adequate rest, there was no relief. Plus, very important, having autonomic symptoms alongside chest pain. ऐसा नहीं कि सिर्फ पेन है, पेशेंट विल हैव ऑटोनॉमिक सिम्टम्स और सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी सिम्टम्स लाइक स्वेटिंग, टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन। ठीक है, कई बार वॉमिटिंग भी हो जाता है ना? तो दिस इज व्हेन यू विल सस्पेक्ट ओके दिस इज समथिंग सीवियर एंड इट कुड ऑल्सो बी ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अंजाइनल टाइप ऑफ चेस्ट पेन वर्सेस प्लूराइटिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन एंड ऑल्सो आस्क्ड वेरियस टाइम्स एज अ पार्ट ऑफ ऑस्की एज वेल। ठीक है, एज पर द न्यू सिलेबस। अभी ब्रेथलेसनेस, सेकंड इंपॉर्टेंट चीफ कंप्लेंट है ब्रेथलेसनेस। जब भी हम ब्रेथलेसनेस सुनते हैं, अगेन हमारे पास सीवीएस आरएस दोनों के हैं, बट इस सिस्टम्स हमें याद आते हैं, बट अगेन there are non-cardiorespiratory causes of breathlessness as well. So what are those non-cardiorespiratory causes of breathlessness that you know of? This is very important because most of the times whenever the patient is breathless, our first instinct is कि अरे इसको कुछ एमआई या फिर न्यूमोनिया होगा, but it turns out to be something different most of the times. What are those non-cardiorespiratory conditions? Or may I ask this? Anemia, अनीमिया इज यस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेंशन किया है, yes, डायबिटिक कीटोसिस metabolic. यस, यस यस। सो बेसिकली इसलिए हमें डेफिनेशन ऑफ ब्रेथलेसनेस पता होना चाहिए। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ब्रेथलेसनेस? ब्रेथलेसनेस इज एन अनड्यू अवेयरनेस ऑफ वंस ओन ब्रीदिंग। So it is not just hypoxia or hypercapnia. If you have read Hutchison clinical book, clearly फर्स्ट लाइन में ही लिखा है इट इज नॉट अबाउट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना। इट इज नॉट जस्ट हाइपरकैप्निया, दैट मीन्स ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। इट इज ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस ऑफ वंस ब्रीदिंग। ठीक है, तो इट हैज टू डू मोर मोर अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम जब ये ध्यान में रखते हैं देन वी रियलाइज दैट ओके इफ द पेशेंट हैज सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देन ऑल्सो देर विल बी हाइपरवेंटिलेशन, पेशेंट विल ट्राई टू वॉश आउट द एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो उसमें भी आपको पेशेंट को डिस्निया हो सकता है। ठीक है, इवन इफ द हार्ट एंड द किडनी आर एक्चुअली नॉर्मल। इसमें और कहाँ हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस? इवन यूरेमिया में सीकेडी पेशेंट कैन लैंड अप इन डिस्निया। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, लैक्टिक एसिडोसिस है ना? ऐसे कई पेशेंट्स में आपको डिस्निया मिल सकता है। अनीमिया, Mm. अनीमिया में क्या कॉज होगा? व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपोक्सी dyspnea in anemia? Actually what happens is in anemia the lungs are normal, so patient can breathe in air and the oxygen gets dissolved in the blood also, so पर ventilation का issue नहीं है। but यहाँ पे because of lack of hemoglobin there is not a good transport of oxygen or not adequate transport of oxygen occurring in towards the heart, so there is a dyspnea। तो अनीमिया में अलग कॉज है डिस्निया का। इस तरह से यू कैन गेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दैट व्हाट इज नॉन कार्डियो रेस्पिरेटरी कॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस। और देयर कैन अनदर क्वेश्चन, ये भी हचिसन में एक टेबल है, व्हाट आर द कॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस, विल यू विल फाइंड ए नॉर्मल एक्सरे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस। उसमें फिर आप बोल सकते हो कि सीओपीडी में यू कैन हैव सीओपीडी में नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल बट एस्मा में यू कैन से दैट देयर कैन बी नॉर्मल एक्सरे, ब्रोंकाइटिस में एक्सरे नॉर्मल हो सकता है एंड ऑल द कंडीशंस दैट यू हैव लिस्टेड कि एसिडोसिस में, अनीमिया में यू कैन हैव ए एक्चुअली नॉर्मल एक्सरे। ठीक है, इवन Yes. एक्यूट इमरजेंसी जैसे कि फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन या फॉरेन बॉडी अटकता है बच्चों में स्पेशली ट्रकिया में या ब्रोंकाई में, दैट कैन ऑल्सो गिव राइज टू सडन ब्रेथलेसनेस एंड पेशेंट कैन बी वेरी सिक व्हेन यू हैव सीन सीन हिम। ठीक है, तो इसमें ब्रेथलेसनेस में फिर हमको जो सिम्टोमेटोलॉजी है that we have to talk in terms of onset, progression, aggravating and relieving factors that she has clearly mentioned। ठीक है, एग्रेवेट कब होता है, रिलीव कब होता है। इसमें एक और चीज हमने मिस किया है, दैट इज द ग्रेडिंग ऑफ द ब्रेथलेसनेस। यू हैव टू ऑब्जेक्टिवली ग्रेड द ब्रेथलेसनेस। ठीक है, इवन इन अंजाइनल पेन ऑल्सो देर शुड बी अ ग्रेडिंग एंड ब्रेथलेसनेस में ऑल्सो देर शुड बी अ ग्रेडिंग। सो व्हाट ग्रेडिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस you would like to use in this case? Which grade you would like to use, or any Um, classification you can use? like the patient complaint of breathlessness during strenuous activities, so it can be uh, grade 0, I think. Okay, you are talking about NYHA classification, तो वही Yes. क्वेश्चन था
कि Yes, what classification you are going to use. It is New York Heart Association New York classification Heart most common. Association. There are various other classification system, but most commonly we use this NYHA classification. I know that you have mentioned about it in detail in the further slide, तो मैं अभी उसमें नहीं जा Yeah, रहा हूँ. But NYHA is very important. And there is one more question here कि why not MMRC? Even MMRC is a grading of breathlessness, and NYHA is also grading of breathlessness. So why not MMRC? Question might come. तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता sorry, she, I have no idea. है? नो इशू. कोई Like, इसमें सॉरी होने का. सो MMRC is not used here because MMRC is used in all the conditions except cardiac, but NYHA is definitely about cardiac. So Kalp has mentioned it right in the chat box. cardiac. Okay. Breathlessness is associated Yeah, with cardiac symptoms, then you can definitely think of and use the NYHA classification instead of a MMRC classification. But if you are very yeah. sure that you are dealing with a respiratory case, then Hmm. go for the uh, you should go for the MMRC classification instead of a NYHA classification. ठीक है. तो that is again an important चीज. तो इसमें आपको फिर वो फैक्टर इन करना पड़ेगा कि सारे क्लासिफिकेशन स्टेजेस आपको पता होना चाहिए. एंड एक यहाँ पे एक और चीज है, सम पीपल डू एक्सपेक्ट that you mention breathlessness in a way that is affecting the patient's life. इसका मतलब क्या हुआ? If the patient is a agricultural laborer, suppose करो, he was able to work in the farm a couple of years back, but now he is not able to work in the farm. In fact, he is not even able to walk till the washroom. तो इस तरह से अगर तुम एक्सप्लेन करते हो, then the examiner get a clear idea that you have tried to collaborate the patient symptoms with his or her occupation and daily routine. ठीक है, तो इस तरह से अगर तुम मेंशन करते हो, दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा एज. तो जैसे वो ऑफिस वर्कर है तो वो बोल सकता है कि मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे ब्रेथलेसनेस नहीं होता है, बट मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तब मुझे ब्रेथलेसनेस होता है. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इस्केमिक हार्ट डिसीज इज द ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड मिसमैच. तो अगर वो मिसमैच कहाँ पे होता है, इन विच पार्ट ऑफ द डेली रूटीन ही इज गेटिंग दैट मिसमैच, दैट यू शुड बी एबल टू कोलैबोरेट एक्सप्रेस इन द हिस्ट्री एज वेल. तो वो चीज आपको ध्यान देना है. ठीक है. यहाँ पे नेगेटिव हिस्ट्री बहुत अच्छे से लिया गया है. ऑर्थोपनिया, पीएनडी, पीडल एडिमा. सो यहाँ पे पीडल एडिमा यू कैन नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू यूज, यू हैव टू एक्सप्रेस द सिम्टम इन पेशेंट्स ओन लैंग्वेज. तो स्वेलिंग ओवर द लोअर लिम्स you can use, and you have correctly said that all these are symptoms of the heart failure. Heart failure we have recently covered heart failure as one of the topics. उसके बाद पेन एट रेस्ट, यस, अनस्टेबल एंजाइना, एसीएस. syncope history was asked. Syncope can occur in so many different conditions related to the cardiac. In fact, syncope as itself is a huge topic. It can be a neurogenic and cardiac. In cardiac, if you talk about syncope, it can occur in different arrhythmias, cardiomyopathies, even in LV output restricted, LV outflow obstruction cases में भी आपको मिल सकता है, जैसे कि hypertrophic cardiomyopathy or aortic stenosis, severe aortic stenosis में because of decreased LV output you can get syncope. Even in fact, it is a very important cardinal sign of aortic stenosis. So that is also an important question. ठीक है. Fever you have asked, that is okay. Cough is very important for respiratory cause. Here only one correction I would like to make. Pulmonary edema is a usually a cardiac origin. So pulmonary edema में दो चीजें हम बोलते हैं, either cardiac origin, non cardiac origin. Cardiac origin is the more common form, which is known as the cardiogenic pulmonary edema, and non cardiogenic pulmonary edema is also known as acute respiratory distress syndrome. ठीक है. तो non cardiogenic pulmonary edema, you have to try to find the cause. If the heart you find it is normal and still the patient has all the features of pulmonary edema including hypoxemia, there is a Berlin's criteria that you apply. I don't know if you get a question on ARDS, but it can be a short question, especially if you have critical care questions in your paper. So ARDS can come as a short question. ठीक है. Past history importance is there. Again, hypertension, diabetes, all of them are risk factors of ischemic heart disease. And previous complaints. So if you are asking about previous complaints or previous ischemic heart disease, then you can say that these symptoms are probably due to inadequate symptom control despite medications. So that can also be expressed if you ask about the history of IHD in the past. ठीक है. पर्सनल हिस्ट्री में आपने स्मोकिंग के बारे में अच्छे से पूछा है, आपने अल्कोहल के बारे में पूछा है. So even for every case, it is my suggestion that if you are mentioning alcohol intake, kindly try to calculate units per week.
ठीक है, तो टोटल यूनिट्स पर वीक इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश करना है स्मोकिंग और अल्कोहल की हिस्ट्री में। फॉर स्मोकिंग यू हैव करेक्टली मेंशन्ड द पैक ईयर्स, एंड फॉर जस्ट फॉर अल्कोहल डेफिनेटली यू शुड मेंशन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूनिट्स दैट ही इज कंज्यूमिंग पर वीक। ठीक है, बाकी अदरवाइज इट्स ऑल ओके। बट इन्वेस्टिगेशंस थोड़ा सा और स्पेसिफिक होते हैं हम लोग, एक Yes. एक इन्वेस्टिगेशंस वी विल हैव टू थिंक अबाउट कि क्यों करना है। इसमें अभी किडनी फंक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ वेरियस ड्रग्स दैट वी गिव इन IHD, दैट इज द एंटी अंजाइनल ड्रग और डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स भी हम जो देते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू रेज द पोटेशियम। सो देयरफॉर सोडियम पोटेशियम लेवल्स आर इम्पोर्टेंट। डायूरेटिक्स देते हैं तो सोडियम कम होता है, पोटेशियम कम हो सकता है, सो दैट देयरफॉर बेसलाइन लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल इज इंपॉर्टेंट टू असेस इफ द पेशेंट हैज एन अंडरलाइंग renal disease or the drugs that we are trying to give they can cause a renal dysfunction as well. Lipid profile is a risk factor of deranged lipids is a risk factor for IHD. Complete LFT nahi, but at least the liver enzymes are important because if the patient goes in shock these liver enzymes can इंक्रीज। ठीक है, सो ECG ऑफ कोर्स इज अ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो मैथिली यू कैन कंटिन्यू विद द एनी मोर क्वेश्चन वी कैन टेक इट इन द एंड। ठीक है। Like I wanted to ask everybody differential diagnosis for this case. If you want to skip, I'll skip. I'll go to the next slide. ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हो। ठीक है, ठीक है. Okay, so starting with IHD, ischemic heart disease definition, it's a condition or a group of heart disease in which there is an imbalance in the myocardial blood oxygen demand and supply, as Shri has already mentioned, which leads to an inadequate supply of blood and oxygen to the myocardium. So there is a oxygen demand and supply imbalance, and it causes decrease in oxygen to myocardium, and it is a leading cause of death in male and female worldwide. So, talking about the epidemiology, so the obesity, insulin resistance, smoking, alcohol are powerful risk factor for IHD, and the genetic factors, high fat and energy-rich diet, sedentary lifestyle are also associated with IHD. Hence, IHD is most common, serious and chronic life-threatening illness in USA, as well as in now it's more common in South Asian countries like India as well, because Western diet and the Westernization, urbanization, everything is being adapted here. So high rich fatty diet, every and sedentary lifestyle. So it's more common here as well, and the gender ratio is equally high. Now coming to the pathophysiology. Concept of imbalance. So normally the myocardium has two types of circulation: microcirculation and macrocirculation. In this diagram, I am talking about this diagram. So the macrocirculation, uh, it's epicardial arteries whose diameter is more than 400 micrometer, and its main function is to transport. And then the microcirculation starts. Here, the small arteries whose diameter is less than 400 micrometer, and it's further divided into small arteries, arterioles, and capillaries. And their main function is to regulate and exchange. And it's important because they उनका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, लाइक R1, R2, R3, and it's the capillaries have the smallest diameter and they offer the maximum resistance. So normally, the myocardium controls oxygen-rich blood supply to prevent underperfusion, and the determinants of myocardial oxygen demand are the heart rates, myocardial contractility, myocardial wall tension. As the blood flows in the coronary arteries in the biphasic manner, like the majority during the diastole. Like we all know, the during the diastole, the coronary blood flows, and the heart gets blood during the diastole only. And the factors which determine its oxygen supply are the heart rate and myocardial contractility. Um, then talking about the resistance, the large epicardial arteries, let's suppose, offer resistance of R1
prearterial vessels offer R2, and intramyocardial capillaries they offer R3. Normally, R2, R3 are much higher than R1, and when the R2 and R3 decreases resistance, there is dilation of vessels. As the oxygen demand changes as per the exercise and emotions, your body regulates to alteration of metabolic regulation and autoregulation. It alters BP to get the adequate supply, and it's all an autoregulatory mechanism. So there is oxygen demand supply imbalance. So it's due to the reasons are decreased luminal size, like atherosclerosis, vasospastic angina, there is decreased coronary blood flow. There can be any congenital abnormalities like origin of the left anterior descending artery from the pulmonary artery, or there can be left ventricular hypertrophy, which leads to decreased coronary blood flow, or it can be due to severe aortic stenosis. So um, this is how the ISD pathophysiology looks like. Like these are the causes which can lead to imbalance between the myocardial oxygen supply and demand. And the first cause, which I mentioned, is atherosclerosis. So the coronary atherosclerosis is one of the very prime suspect in this, and the risk factor of atherosclerosis can be modifiable major risk factor, non-modifiable risk factor, or any additional risk factor. The modifiable major risk factors are hyperlipidemia, hypertension, cigarette smoking, or diabetes mellitus, which can be modified. It means it can be treated and it can be prevented also, like by the treatment or the preventive modalities. Then there are non-modified risk factors like increasing age, um, and male gender, family history, genetic abnormalities. And the additional risk factors can be inflammation, raised CRP, hyperhomocystinemia, metabolic syndromes, lipoproteinemia, etc. Um, Atherosclerosis disturbs the normal function of vascular endothelium. What's the normal function? Like it controls the it prevents vascular cell adhesions and platelet aggregation, etc. There is endothelium injury, and the control of inflammatory cell adhesion, diapedesis, and the wall stress and antithrombotic surface is lost, and it causes the subintimal fat collection in the in the intimal layer of the arteries, and there is then smooth muscle collection, fibroblast, and intracellular matrix, which together forms a atherosclerotic plaque in the tunica intima. So there are phases of formation of this plaque. Atheroma, it's also known as atheroma. In the early atherosclerosis, there is fatty streak formation in which the LDL platelet leukocyte adhesion at the site of endothelial injury, there is LDL platelet and leukocyte adhesion, which forms an atheroma, which also has lipid cell, and the lipid cell engulfs the macrophages to form the foam cells. Then the atheromatous plaque is formed. The plaque can be of two types: stable plaque, or it can be a vulnerable plaque. The What is a stable plaque? So a stable plaque is a dense collagenous thick. It has a dense collagenous thick fibrous cap, and uh, minimal inflammation is present, and there is a necrotic core. And in vulnerable cap has a lot of foam cells and a lipid core, and it has a lot of inflammation as well. And the fibrous cap can rupture very easily because of inflammation, lipid core, because it's not very stable, and uh, like sorry, I have not mentioned. The atheromatous plaque has three regions. The top one is a fibrous cap, then a necrotic core, and at sides it has shoulders. So the fibrous cap is very dense, collagenous, and stable, and it's very thin in vulnerable plaque. So vulnerable plaque, of course, is a very uh, vulnerable only, like fragile. It can break, and it will cause thrombus and
emboli. Now the plaque protrusion. This plaque has formed at the endothelium. It's now started protruding through the intima to the lumen. So it will lead to turbulent blood flow, which will further damage the endothelium, and it will rupture and erode and cause ulceration as well. And the other complications are thrombosis, emboli, and hemorrhages, atheroembolism, aneurysm, and calcification, etc. So yeah, this is the whole diagram which I have mentioned. Uh, these are the three layers of the artery: intima, media, and adventitia. In the intima, there is an atheromatous plaque formation. It has cholesterol clefts, and then the plaque changes. There is rupture, fissuring, and ulceration. Then there is platelet aggregation due to various factors activation. I'll mention it later. And then there is a thrombus formation. So this is all about atherosclerosis. Then due to atherosclerosis, there is non-uniform ischemia. Like now there is a complete oxygen demand मैथिली supply मुझे बस एक mismatch, पॉइंट and ऐड करना है. it will lead to um, yes. एक ही पॉइंट है, हाँ. थैंक यू सो मच, तुमने बहुत ही प्यारा तरीके से मुझे एथेरोस्क्लेरोसिस समझाया. आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिपिक्शंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द प्रोसेस दैट आई हैव एवर हर्ड. तो मुझे Thank you मुझे so सेकेंड much. ईयर का याद आ गया. सेकेंड ईयर में हमारे डॉक्टर अंशु मैम है जो जिन्होंने हमें एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ाया था. But most of the concepts of atherosclerosis are dependent on the formation of stable plaque and how the stable plaque gets converted into a vulnerable plaque. So, Yes. unfortunately, as we are seeing that we are not clearly able to explain कि कैसे एक स्टेबल प्लाक वल्नरेबल बनता है, या फिर वल्नरेबल प्लाक होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए स्टेबल प्लाक में. दैट वी आर नॉट एबल टू क्लियरली यस एग्जैक्टली, मतलब एक्सप्लेन. मैंने भी काफी ज्यादा मतलब देखा, तो फिर कहीं पे भी अच्छे से क्लियरली रीजन मेंशन्ड नहीं नहीं है. नहीं नहीं हुआ, नहीं. सो दैट इज द समथिंग दैट इज बीइंग रिसर्च्ड अपॉन, जो रिसेंटली मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ा था, तो दे आर स्टिल रिसर्चिंग ऑन. बिकॉज जो हम बोलते हैं कि प्लाक, तो अगर आप कोई भी एंजियोग्राफी करते हो, अभी बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स मस्ट हैव इस्केमिक हार्ट डिसीज, और मे बी दे हैव हर्ड ऑफ समवन हु हैज गॉट एन इस्केमिक हार्ट डिसीज, देन डेफिनेटली दे हैव अंडरगोन एंजियोग्राफी. तो जब एंजियोग्राफी होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 50% प्लाक है, 60% प्लाक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट अगर हमारा भी एंजियोग्राफी हो जाता है तो वी वुड ऑल्सो एंड अप हैविंग सम और सम लेवल ऑफ प्लाक. बट वी आर नॉट एट रिस्क ऑफ इशेमिक हार्ट डिसीज पर से, है ना. क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे, ये ब्लड वेसल है. ब्लड वेसल के अंदर ट्यूनिका, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया है. तो जो यस. हमारा प्लाक बन रहा है दैट इज एक्चुअली अ वेरी स्टेबल प्लाक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कोलाजन. ठीक है, तो कोलाजन होने के कारण, एंड मोर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट शी हैज मेंशन कि फैट है उसमें, फिर स्मूथ मसल्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, कोलाजन है. बेसिकली कोलाजन है दैट डज नॉट अलाउ द इनसाइड मटेरियल, जो अंदर वाला मटेरियल है उसके अंदर जो लिपिड कोर है, या फिर उसके अंदर जो थ्रोम्बोजेनिक मटेरियल है, दैट इज नॉट बीइंग एक्सपोज टू द ब्लड सर्कुलेशन. अगर वो एक्सपोज हो जाता है देन दैट इज द मोर डेंजरस थिंग, जो कि वल्नरेबल प्लाक में हो जाता है. तो अगले डायग्राम में यू आर एबल टू सी दैट व्हेनेवर दिस स्टेबल प्लाक कन्वर्ट्स टू वल्नरेबल प्लाक बाय सम मैकेनिज्म, देर इज रप्चर, फिशरिंग और अल्सरेशन. तो ये जो सारा मटेरियल है वो बाहर एक्सपोज हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स दिस थ्रोम्बस. द थ्रोम्बस अनफॉर्चुनेटली इज नॉट स्टेबल, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. The thrombus which forms over a already existing atheromatous plug is not stable, and because it is not stable, it can rupture easily, it can form emboli, it can go to different places and cause blockages, or even if the area which has already ruptured, वहां पे प्लेटलेट जाके चिपक जाएंगे. प्लेटलेट चिपकने के बाद उस जो आर्टरी का लुमेन है वो छोटा छोटा होते जाता है. सो उसके बाद जो होता है दैट इज व्हाट इज नोन एज इस्केमिया. तो अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि आर्टरी का जो लुमेन है कंसिडर 100%, तो अगर वो 50% 60% भी हो जाए दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ ह्यूज ट्रबल, बिकॉज as we have heard in the first pathophysiology section that the cardiac vessels have a property of auto regulation. So anyhow, depending on the exertion, the cardiac vessels or the coronary arteries hai, they are able to manage the blood circulation in spite of having a stable plaque. ठीक है.
बट जब वो अनस्टेबल हो जाता है, वहां पे बहुत सारे प्लेटलेट आ जाते हैं, द कार्डियक वेसल्स और द कोरोनरी वेसल्स डू नॉट गेट ए चांस टू compensate, and there is a formation of an unstable plug, and there is a severely decreased lumen. तो यहाँ पे फिर ischemic changes आने की शुरुआत होती है. That now we will see in the next section. You can continue. Yeah, sure. So, as she has very well explained, now the ischemia starts, and it's a non-uniform type of ischemia due to decreased oxygen tension and disturbed biochemical, mechanical, and electrical and myocardial function. It will cause ventricular contractility disturbance, which causes hypokinesia, akinesia, dyskinesia. This occurs at various stages, like it's not suddenly, it occurs with exposure time, with time it proceeds. uh, Now I'll explain this diagram. It's a exposure time mismatch in myocardial oxygen supply demand. So as the time proceeds, there are various stages through which the heart undergoes changes. The first is endothelial and microvascular dysfunction. It's the earliest abnormality where the coronary vessels loses their ability to dilate properly and the blood flow regulation becomes impaired. Then, sorry, my voice is decreased. Is it like so? Like everyone is facing the same issue? अ, तुम्हारा माइक अगर थोड़ा पास में लेके बात करो तो शायद हो जाएगा. मैं डिवाइस का ही यूज कर रही हूँ. आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग लाइक ईयरफोन और एनीथिंग. शुड आई कनेक्ट एनीथिंग और आई स्पीक अ अभी लिटिल ठीक आ रहा है. लाउडर. अभी अभी तो ठीक ठीक आ है. रहा है. हाँ. अगर वापस से दिक्कत होता है तो प्लीज लेट मी नो. अभी ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है. ओके. So the earliest change is endothelial and microvascular dysfunction. The blood flow regulation becomes impaired. Then the second is there is decreased subendocardial perfusion. Why subendocardial? Because it is the most vulnerable to ischemia. It's because it's farthest from the epicardial coronary arteries, and it experiences highest of the wall stresses. So ischemia starts in the subendocardial first. Then there is altered metabolism and abnormal ST segments. So here ECG comes in the picture. There is a shift from aerobic to the anaerobic metabolism, which causes altered metabolism, and there is increased lactate production. So the ST segment and the T wave abnormalities may start to appear on ECG. Then there is microinfarction or myocardial fibrosis. So there on repeated episodes of ischemia, the myocardium starts to develop infarctions, fibrosis, and because infarctions are produced, it will cause healing, and then it will lead to fibrosis. Then then our ventricle starts disturbing, and it's the first mechanical abnormalities that is diastolic dysfunction. Um, the ischemic myocardium cannot relax properly, and there is the LV filling become impaired. So it will cause hypokinesia, dyskinesia. So then after diastolic dysfunction, there is decreased segmental perfusion, which is detectable, not detectable like on nuclear perfusion scans. Then there is regional wall motion. The ischemic segment becomes hypokinetic, akinetic, and dyskinetic, and it is very well seen on like echo. And then the heart systole is also gone now. There is reduced contractility and ejection fraction, and the mechanical activities disturbed now of heart. So these all things are now I have mentioned it thoda sa. It also ECG changes due to repolarization abnormalities. There are T wave inversion, ST segment displacement. It can be depression and elevation. Like if
patchy subendocardial ischemia is present, then it will be ST depression, and elevation is seen, ST segment elevation is seen in severe transmural ischemia, like when all the layers are involved. So later on stages, ST elevation is seen. And isolated ventricular premature beats can be also seen. Ventricular tachycardia, ventricular fibrillation can also be seen in ECG. Then, yeah, this diagram I have explained, it's ischemic cascade. It's very important to know how the disease proceeds as time. Next, next, what? सो यहाँ पे हमने वही डिस्कस किया है कि हाउ एथेरोस्क्लेरोसिस इवेंचुअली और लीडिंग टू इस्केमिया एंड इस्केमिया इज लीडिंग टू सीरीज ऑफ स्टेप्स लीडिंग फाइनली इवेंचुअली लीडिंग ऑन टू द सिस्टोलिक डिसफंक्शन. बट यहाँ पे Yes, एक चीज हमें और ध्यान में देना है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन एंड प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. तो उसमें हमने वी हैड टेकन टू सेशंस, वन वाज ऑफ ऑन हेफरेफ एंड सेकंड कवर्ड द हेफपेफ मतलब प्रिजर्व्ड इजेक्शन. तो उसमें हमने ये चीज ध्यान में रखी थी कि इट इज नॉट ओनली अबाउट इजेक्शन फ्रैक्शन दैट डिटरमाइंस हार्ट फेलियर. Why is it so? Here we get a reason कि even with myocardial fibrosis and different microinfarctions, the LV, that is the left ventricle, can land up into the diastolic dysfunction. So what is diastolic dysfunction? Anybody? क्या होता है diastolic dysfunction? डायस्टोल क्या है? हमने देखा था कि डायस्टोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कार्डियक साइकिल बिकॉज द चेम्बर हैज टू कलेक्ट और फिल विद ब्लड बिफोर इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट ब्लड. इसलिए हमारे पास डायस्टोल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. और डायस्टोल का इंपॉर्टेंस हम अभी तक ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, बट रिसेंटली व्हेन वी हैव अंडरस्टूड अबाउट हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन, जहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहने के बावजूद पेशेंट हैज फेलियर सिम्टम्स, तब हमें पता चला है कि डायस्टोल इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज ए systole. तो इसलिए even if the patient has a ejection fraction normal, might be over 50%, 55 or 60%, if the patient has a heart failure symptoms, you should definitely evaluate him for his symptoms, signs, और ECG और echo करके हमेशा देखना चाहिए. What you should focus on is on the diastolic dysfunction. It has various grades like grade 1, grade 2, grade 3. In echocardiography we have to understand it. बट आपको ये चीज देखना बहुत जरूरी है, इसमें एलवी का कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होता है, डायस्टोल मतलब डायस्टोल अफेक्ट हो जाता है. तो धीरे धीरे अगर diastolic dysfunction progresses into systolic dysfunction, but diastole dysfunction by itself can cause heart failure symptoms, which we are now terming it to be as heart failure with preserved ejection. ठीक है. So most of the cardiomyopathies and heart failure are because of an ischemic origin, which are in turn because of a atherosclerosis. So coronary atherosclerosis is the driving pathology behind all these different cardiac pathologies. एंड उसका बेस एथेरोस्क्लेरोसिस में, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हम लोग समझ चुके हैं. और एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जो इस्केमिया होता है, उसके बाद जो बदलाव आते हैं हार्ट में, उसके बारे में भी हम समझ चुके हैं. यस, यू कैन गो अहेड. yeah. Um, now we'll go with another ischemic heart disease. It's angina. For angina, history is very important. The patient typically presents as a 50-year-old man, more or 50-year-old man, and a woman with 60 years or more, who complains of episode of chest discomfort, usually described as heaviness, pressure, squeezing, smothering, or choking, and rarely as a front pain. When the patient is asked to localize the sensation, they typically place a hand over the sternum, sometimes with a clenched fist, to indicate a squeezing central substernal discomfort, which is Levine sign, as she has mentioned, Levi, and he proposed that. And this sign is very important. The patient comes as a clenched fist over the chest. Then clinical syndrome present as paroxysmal recurrent attacks of substernal or precordial chest discomfort due to transient myocardial infarction. The precipitating factors can be divided into two. It can be due to increased oxygen demand or decreased oxygen supply.
So oxygen demand can be increased during exercise, stress, tachycardia, pregnancy, hypertension, LVH, hyperthyroidism, aortic stenosis, severe AR, and arrhythmia. And oxygen supply can be decreased during anemia and when there is decreased diastolic duration, like in tachy, in fever. Then we come to types of angina. Here I've mentioned very less, I think. Stable angina, unstable, there are various stable angina. So in stable angina, there is a fixed reduction of more than equal to 70% in the coronary vessel diameter. So stable angina is due to a fixed atherosclerotic plaque causing a stable narrowing, which can be of more than or equal to 70% of the coronary vessel diameter reduction. So it is a predictable type of phenomena, and the attack occurs during exertion, stress, or any heavy activity, and it lasts for less than 10 minutes, and it is relieved by rest or night by taking night NTGs, and the severity of episodes are similar. And on ECG there can be ST depression, like it's very predictable, and it's very early stages. The stable angina can be of ischemic origin or non-ischemic origin. So how to differentiate the characteristic by the characteristic of pain and by the location. So when it's of ischemic origin, the pain can be of constricting type, squeezing, burning, and heaviness. And when it is of non-ischemic origin, it can be a dull ache type, sharp pleuritic type of pain, and located in the left submammary or left hemithorax. And ischemic origin will be located substernally over the arm, shoulder, teeth, interscapular. Like it can radiate till umbilicus, and in the face, like up to teeth. And there are um, it's a Canadian Cardiovascular Society functional classification of angina. There are four classes. Class one is ordinary physical activities do not cause any angina, such as walking or climbing stairs. Angina with strenuous or rapid or prolonged exertion or work or recreation. Then the second class is slight limitation of ordinary activities like walking or climbing stairs rapidly, and after meals or in cold or under emotional stress. Then walking more than 2 blocks on level and climbing more than one flight of ordinary stairs at normal pace and in normal condition. Then class 3 is marked limitation of ordinary physical activity like walking less than 2 blocks or climbing less than one flight of stairs. And then class 4 is any physical activity brings on angina. It can be angina at rest, and it can be angina at rest is mostly an unstable angina with minimal activity. Yeah, so here I have mentioned the NYHA classification for any heart disease. So it's very important. There are four classes. Class one is there is no limitation of the patient has an cardiac disease, and in class one, it will present with no limitation of any physical activity. The patient have a cardiac disease, but without the resulting limitation of physical activity. Like the ordinary physical activities does not cause any undue fatigue, palpitation, dyspnea, or any anginal pain. Then class two is symptoms are present with ordinary activities. Like patient have cardiac disease resulting in slight limitation of physical activity. They are comfortable at rest. Ordinary physical activity results in fatigue, palpitation, dyspnea, and anginal pain. Then class three is symptoms are present with less than ordinary activities. Like patient have cardiac disease resulting in marked limitation in physical activity. They are comfortable at rest. Less than ordinary physical activity causes fatigue, palpitation, dyspnea, or anginal pain. And then there's class 4. The patient have cardiac disease and inability to carry on physical activity without discomfort. The symptoms are insufficient or angina symptom may present even at rest. If any physical activity is undertaken, discomfort is increased. So this is the NYHA classification for any heart disease. Now, uh, if now we'll discuss the algorithm if we suspect any patient with ISD.
he or she will complain with chest pain. Then uh, evaluate the patient with known or suspected ISD. Then we have possibly indication for stress testing of the patient, like diagnose of ISD uncertain, assess the functional capacity of patients, assess adequacy of treatment program for ISD, and mark abnormal calcium score on EBCT. Can the patient exercise adequately? If the patient can exercise adequately, then we are confounding feature present on resting ECG. Like we do ECG, it's for it. I have covered in further slide, like how do we do ECG and all. Yeah, it's in exercise tolerance test. Like we do ECG of the patient before, like at the time he comes, then during the exercise, and then after it. So if no, then then perform the treadmill exercise test, and the if if the confounding feature present on resting ECG, yes, then imaging study should be performed. And if the patient cannot exercise adequately, then we do imaging study like 2D echo, nuclear perfusion scan, cardiac MR scan, cardiac PET scan, like ECG, echo, MIBI, and CMR and PET. So patient comes with chest pain, we take history, we examine the patient. If it is suggestive of in the testing with ECG, then if the STEMI like ST elevation is present, we go for immediate reperfusion and PCI thrombolysis. And if there is no response, we like the PCI thrombolysis work like, then we go for checking of understandable in ACS wala PDF. So we evaluate like algorithm wise. We do ECG and um, we do ECG and the treadmill test, and then we further evaluate like we have to do echo or PET or anything. Uh, then coming to the examination. एक Uh, मिनट मैथिली आई थिंक हम लोग थोड़ा इधर ब्रेक करते हैं बिकॉज yes, sure. ऑलरेडी काफी कुछ डिटेल वी हैव डिस्कस. सो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में अल्गोरिदम वापस बोल देता हूँ. हाँ हाँ. सो यहाँ पे वी हैव टू now we are having many people who are working at different places, right? So it is not that everybody has access to a cardiac CT or a cardiac MRI. So like I am working at Sevagram, so we don't have a cardiac CT or a cardiac MRI. So this algorithm will differ from place to place. ठीक है, तो ये बात हमें हमेशा याद रखना है. यू जस्ट कैनॉट मग अप ऑल द थियरी पॉइंट्स, राइट? तो जो तुम्हारे सेंटर में होता हो उसको ठीक तरह से समझना जरूरी है. बट दिस इज जस्ट द what the Harrison has to say or something which is given in the book, तो उसको हम ठीक तरह से थोड़ा समझते हैं before going forward. तो सबसे पहले obviously you are going to take a history. History में I have already told what is the difference, how exactly you take a history of a patient having anginal type of a chest pain. But यहाँ पे एक catch है. What is the catch? Like a patient with diabetes or women especially do not have most of the times classical anginal symptoms. ठीक है, तो इन पेशेंट्स में यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज, अंडरलाइंग इस्केमिक हार्ट डिसीज. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन प्रैक्टिस women complaint of either vague complaints like घबराहट हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है या पसीने आ रहे हैं या दिल में दर्द हो रहा है, समथिंग लाइक दैट. और some symptoms that they can come up with is known as the anginal equivalents. So can anyone tell what are the anginal equivalents you know of? Anginal equivalents that actually are pointing towards angina but not exactly chest pain. There are some other symptoms which are actually mimicking angina. कौन से symptoms हो सकते हैं which are anginal equivalents? So anginal equivalents में vomiting है, dyspepsia है, Listening. epigastric pain है, sweating है, yes, nausea, vomiting, yes. All of these are anginal equivalents. So whenever you have a patient where you are suspecting of ischemic heart disease, the first and foremost thing you can do at any particular stage you are working at is to do an ECG. ठीक है, तो vitals you have to take
and then you do an ECG. So ECG is almost as if it is a primary investigation, or even it is a primary thing that you do with of a patient who is complaining of a chest pain or some other general equivalent. ECG is something you do every time. So if you have a baseline ECG showing changes, most of the centers do not opt for a exercise test. ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस में जो होता है वो मैं बोल रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द सेंटर्स डू नॉट एडवाइज फॉर एन एक्सरसाइज टेस्ट, बिकॉज अगर बेसलाइन ईसीजी में आपको अगर चेंजेस मिल जाता है, देन यू कैन स्ट्रेट अवे टेक अप द पेशेंट फॉर 2D इकोकार्डियोग्राफी एंड गो फॉर द एंजियोग्राफी. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सेंटर टू सेंटर इट विल बी वेरिंग, बिकॉज एक्सरसाइज टेस्ट इज अ डेंजरस टेस्ट बाय इटसेल्फ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को आपको स्ट्रेस देना होता है बाय इंक्रीजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, उसमें इंक्लाइन होता है. हाँ, अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस से द हार्ट हैज टू काउंटर, एंड द पेशेंट इफ इज एबल टू डू इट, देन ही इज एबल टू डू इट. अदरवाइज समटाइम्स इट्स अ रेयर थिंग, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द टेस्ट इटसेल्फ ही डेवलप सिम्टम्स, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू इंटरवीन. ठीक है, इतने ज्यादा सीरियस वो पेशेंट हो सकता है. तो इसलिए इट्स अ कॉल ऑफ द लोकल डॉक्टर्स कि उसको एक्सरसाइज टेस्ट करवाना है कि सीधा एंजियोग्राफी करना है. समटाइम्स एंजियोग्राफी, डूइंग एंजियोग्राफी इटसेल्फ इज वेरी feasible. ठीक है, बट अदरवाइज व्हेन द ईसीजी चेंजेस आर नॉट showing clear cut ischemic heart disease, or if the patient is extremely stable, even the echocardiography is normal, then you can definitely do a treadmill exercise test. Doing a treadmill exercise test, you can reduce the patients going for a angiography. ये एक चीज उसमें है, इसलिए हम लोगों को ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट करना है. If on exercise test everything remains okay, even with the ECG changes, you can send the patient home by giving just the anti-anginal drugs or maybe a single antiplatelet. ठीक है, but in cases when you have a different ECG changes, and treadmill exercise test is also not very is equivocal. If you have facility of cardiac CT, please go ahead and do the cardiac CT. ठीक है, तो इसमें कार्डियक सिटी में आपको कैल्शियम स्कोर निकालना होता है. कैल्शियम स्कोर अगर कैल्शियम कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर CAC बोलते हैं उसको, यहाँ पे मेंशन किया है बुक में भी, तुमने भी शायद मेंशन किया है. तो वो निकालने के बाद इफ इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लाक, and you know that that plaque can cause symptoms, then you can take the patient for angiography, or else you can take directly the patient for angiography. Indications for cardiac MRI or nuclear perfusion scan, PET scan, etc. we have to read and mark up, because most of the centers that we are working at, we have not seen cardiac MRI perform routinely. Cardiac MRI is done for cardiomyopathies, especially cardiomyopathies like amyloidosis causing restrictive cardiomyopathy, etc. And cardiac PET and nuclear perfusion have their own indications. We will be discussing in the next class. Okay, तो ये algorithm समझना है हमें. ठीक है, कि चेस्ट पेन होने के बाद you do an ECG. If the ECG is clearly depictive of an ischemic heart disease, and you are looking at the vitals also which look like somewhat unstable, you are going to treat it as a acute coronary syndrome, whether it is a non-ST or ST, basically as a acute coronary syndrome. If you have a PCI enabled setup, you take the patient for PCI. If you don't have a PCI enabled setup, then you give the patient antiplatelet drugs, anticoagulation, probably thrombolize if it is a ST elevation MI, and wait for the cardiologist to come, and then he will perform a secondary PTC. ठीक है, if you do if the patient is extremely stable, you can do a treadmill exercise test if your center has the facility, and then take up the patient for echo and further examination as required. ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं. नेक्स्ट आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टडी, स्टिल ड्रग्स आर लेफ्ट, एंड Yes, एग्जामिनेशन पॉइंट. एग्जामिनेशन इज स्टिल ओके, इट्स नॉट वेरी, मतलब बहुत ज्यादा अलग नहीं है. important. Yes, ECG अलग के नहीं बारे है में लेकिन थोड़ा है डिटेल में डिस्कस. पढ़ना है. हाँ. हाँ, कर सकते, लाइक आई हैव नो हाँ, इश्यूज. नहीं ईसीजी अभी आई कर थिंक, लेते हैं. या नहीं नहीं, हम थोड़ा ब्रेक करते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा. ओके ओके. इसमें अभी तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है क्या? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज. We have understood about stable angina in much detail, how the patients present. We have discussed one case of cardiovascular also. The question that I've asked is usually something which is discussed in Viva, so आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए. We have discussed the cardinal symptoms that we have seen in the case also, and in the CVS system like breathlessness, chest pain, इसके बारे में हमने डिस्कस किया. तो इसमें से किसी को कुछ डाउट है, कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते
तो अगर स्टेबल एंजाइना आपको पूछा जाए तो स्टेबल एंजाइना में ऑल दिस प्लस सम एडेड पॉइंट्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन थोड़ा ऐड करना है, देन योर लॉन्ग क्वेश्चन इज डन, ठीक है। एंड देन यू एक्चुअली प्रोसीड फॉर इवन ड्रग्स इन अंजाना बिकम्स completely एंटायरली अ न्यू टॉपिक, और वो हम लोग कवर करेंगे डेफिनेटली। इसमें से बहुत सारे ड्रग्स आर समथिंग विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन हार्ट फेलियर टॉपिक, एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज हाउएवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम बहुत अच्छे से टाइम देके करेंगे। हम लोग कुछ ईसीजीज भी डिस्कस उसमें कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम वी कैन डिस्कस दोज ईसीजी। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के ईसीजीज कैन बी अ पार्ट ऑफ योर टेबल वाइवा, तो इसके लिए उसको भी अच्छे से हमें पढ़ना है। तो अभी तक कुछ क्वेश्चन? अच्छा, कपिल सिंह, थैंक यू, ठीक है। अभी तक कुछ अगर क्वेश्चंस है देन वी विल डिस्कस, अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे। नेक्स्ट क्लास कब रखना है थोड़ा सा ग्रुप पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आई थिंक वी कैन हैव श्योर। टू गिव 3 to 4 days का थोड़ा हम लोग गैप रखना पड़ेगा, and other हाँ volunteers also start come up with the topics, because शायद next class will be probably will finish this topic। तो फिर बचे हुए जो टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर में, कार्डियोमायोपैथी इज लेफ्ट, एंड effusion and tamponade is left, that is according to the question that we saw repeatedly asked in the university exam। अच्छा, संदीप has asked a question, why stable angina is not considered in acute coronary syndrome? So stable angina में symptoms appear on exertion and relieved on the rest. So it is a something which is the patient does not come with deranged vitals or does not come in shock, और is very well, मतलब ठीक ठाक प्रिजर्व भी पेशेंट होता है, डेफिनेटली अपना काम वगैरह सब ठीक ठाक कर रहा है। So it should be considered as a part of a ischemic heart disease. So you should definitely expose the patient to at least a BP examination, पल्स रेट, सिस्टमिक एग्जामिनेशन डिटेल में आपको करना है, ईसीजी आपको डेफिनेटली उस पेशेंट का करना है। इफ द ईसीजी इज शोइंग एनी चेंजेस विथ angina, the practice says that you should take him for an echocardiography and a coronary angiogram. So stable angina is also an indication of doing an echocardiography and a coronary angiography. You don't actually have to wait for the patient to go into an unstable angina or a myocardial infarction. If you are getting a patient who is complaining of chest pain on and off on exertion, definitely that is an indication for going for angiography. ठीक है? Shri, I have a Yes. question हाँ. this IHD algorithm. It's simple, na? Like first the patient comes with chest pain complaint, then we do the baseline ECG, and if the ECG comes as positive, like ST elevation is seen, then we uh, start evaluating. Like we will take his history and everything. सब उसका वाइटल्स वगैरह चेक करके उसको हम तुरंत ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे। लाइक यही एल्गोरिदम है ना आईएसडी का कि यस यस समथिंग यस ऐड यस। करना है इसमें। नहीं नहीं, यस करेक्ट है। अभी कैसा है ना, इसमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कब हम्म। आप मेंशन करोगे, तो हमने चेस्ट पेन का कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था, अगर चेस्ट पेन रेस्ट में बहुत सीवियर है, अकम्पनिंग विद सिंपैथेटिक यस यस। सिस्टम सिम्टम्स है, ओवर शॉक एक्टिविटी में है, उसका। हाँ टैकिकार्डिया है, हाँ। देन दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट, तो आपको उसको इमीडिएटली ठीक करना पड़ेगा। Whereas for stable यस। angina, you can wait a bit, you can try nitrates, you can give antiplatelets, you can wait for हाँ। the cardiologist, you can discuss with him what exactly next to do। अगर रिस्क यस। फैक्टर्स है, चेस्ट पेन है, सिग्निफिकेंट है, ईसीजी में चेंजेस है, then the cardiologist definitely will say कि इसको angiography we have to do considering the age and other factors। ठीक है, but हम्म। if the ECG is telling you that okay it is a ST elevation, or even हम्म। if it is non-ST elevation with the patient being not stable, then you have to हम्म। definitely act upon it. You have to give antiplatelets, anticoagulation, thrombolize if necessary, and then take the patient for PTCA. If you have a PTCA facility, well and good, you can directly take up the patient for primary PTCA if the patient is within your time frame। ठीक है, तो ये सारी चीजें यस हमको टाइम के बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बट मोर और लेस इट इज द सेम अप्रोच, जस्ट द टाइम आपको कितना देना है। जैसे स्टेबल एंजाइना है तो आपको शायद आप एंटीप्लेटलेट और नाइट्रेट देके आप थोड़ा वेट कर सकते हो, अगले हफ्ते तक यू कैन वेट। और इफ द पेशेंट सेज यस। कि मैं 2-3 दिन में मैं शहर जाऊंगा, तो तुम्हारे हॉस्पिटल में आई डोंट नो, बट हमारे इसमें कैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट के कुछ फिक्स डेज है तब आते हैं, देन वी आस्क देम टू वेट, हाँ। वी एडमिट देम, वी लुक फॉर ईसीजी चेंजेस, नए कुछ आते हैं क्या, वी देन इवेल्युएट हम्म। फॉर द मेटाबॉलिक फंक्शन, जैसे तुमने बोला है वहां पे कि शुगर्स देखना है, हम्म। क्रिएट देखना है, ये सब चीजें। हम्म। तो वो वी विल डू, लिपिड पैरेंट्स वी विल डू।
And we keep him posted for an angiography or a cardiologist opinion. If the cardiologist says ki it is absolutely necessary to go for angiography, then we take him for angiography. Hmm. ठीक है. Okay, okay. Yes, yes, स्ट्रेस yes. टेस्ट का जो रोल है ना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है प्रैक्टिस में, क्योंकि हाँ. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ए इस्केमिक हार्ट डिसीज ओनली ऑन कोरोनरी एंजियोग्राफी. तो इवन द Yes, पेशेंट्स ऑल्सो फील बेटर इफ दे अंडरगो एंजियोग्राफी, कि एक रिलीफ भी हो जाता है वो कि दिमाग में से चले जाता है exactly. कि देयर इज समथिंग. अदरवाइज वो लाइक दिमाग में हमारे कंटिन्यू हॉस्पिटल रहती है. में भी मैंने ज्यादा देखा नहीं है कि एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कर रहे, बट ये टेक्स्ट बुक में मेंशन था, दैट्स व्हाई मैंने भी मेंशन किया तो कि लाइक हाँ हम करते हैं यस ईसीजी यस में। करेक्ट. इफ द बट पेशेंट इज यहाँ पे भी. एब्सोल्युटली स्टेबल, उसका बस जैसे कुछ कई बार क्या होता है, इट कैन बी लाइक अ सोमैटोफॉर्म कंप्लेंट ऑल्सो, चेस्ट पेन भारी भारी हम्म. लागते. पीपल कम टू अस से हम्म. भारी भारी लागते, छाती दुखते, हल्का हल्का दुखते, मतलब देर इज हम्म. नथिंग लाइक एंजाइनल पेन इन दैट. इन दोज केसेस यू कैन अवॉइड एंजियोग्राफी बाय डूइंग द ट्रेडमिल टेस्ट, सो दैट द यस, यस. पेशेंट टेक गिव्स एन एफर्ट ऑल्सो. और कई बार इंश्योरेंस में वगैरह ट्रेडमिल टेस्ट इज इंक्लूडेड. So, if the treadmill test is possible and if the patient does it successfully without developing any symptoms, or even in the changes, ECG changes are also not seen, then you can avoid doing the angiography, because angiography is again an invasive test. ठीक है. यस. तो वो अवॉइड कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट डू एन इको एंड जस्ट रीअश्योर द पेशेंट कि एवरीथिंग इज फाइन. But if the फाइन. patient is unstable, he has recurrent chest pain, even at rest he is feeling discomfort, he is an aged patient, you know that he will not be able to tolerate this much exercise, then please go for directly angiography. ठीक है. यस. और another thing is angina can be a symptom of other diseases also, like valvular heart disease. तो ये बहुत बार होता है कि पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ, दिमाग अपना सिर्फ इस्केमिक हार्ट डिसीज में ही रहता है, बट व्हेन यू इवेल्युएट यू फाइंड दैट द पेशेंट एक्चुअली हैज अ माइट्रल स्टेनोसिस और maybe an aortic stenosis or even an aortic regurgitation, because valvular heart disease can also produce angina. ठीक है. angina is basically what a crying myocardium. ठीक है. Sandeep is saying that conduct a session on management of, yes. Next topic itself, Sandeep, we are discussing acute coronary syndrome, diabetes. Yes, high risk factor तो है ही डायबिटीज, तो डायबिटीज का मैनेजमेंट हम लोग उसको पैरेलली इंक्लूड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर योर सजेशन. So what I was saying is कि if the patient is stable, you can avoid angiography by doing that stress test. If the patient is otherwise unstable and you are not able to, you don't have a facility of stress test, then you can straight away take up the patient for a 2D echo and angiography. But angina can be a symptom of various cardiac diseases, including valvular heart diseases. तो आपके एग्जामिनेशन में ये सब चीज ना मिस हो, इतना याद रखना, क्योंकि हम लोग अल्गोरिदम में जाते हैं, देन वी स्ट्रेट अवे डू ईसीजी, बिकॉज दैट इज व्हाट आवर सीनियर्स टेल कि जब भी चेस्ट पेन का पेशेंट आए तो पहला ईसीजी कर लो. So we do an ECG, we find that there are no STT changes, we are actually happy, but you may miss some occult valvular heart disease. So detailed examination must always be done either before ECG or after doing ECG, but it should not be missed. So never miss putting a stethoscope to a patient who complains of angina. Sometimes you can get a respiratory illness also. कई बार chest tightness is a symptom of asthma or acute exacerbation of COPD. You can miss those symptoms. तो साइंस एंड सिम्टम्स को हम बिल्कुल रूल आउट नहीं करेंगे. एग्जामिनेशन जो हम लोग कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, दैट इज जस्ट ए सप्लीमेंट्री, बट ईसीजी हैज अ वेरी वाइटल रोल इन द इवेल्युएशन ऑफ चेस्ट पेन, बट इट शुड नॉट सप्लीमेंट द होल एग्जामिनेशन. पूरा एग्जामिनेशन आपको डिटेल में करना ही है. ओके. और यस, कुछ यस. किसी को क्विक कमेंट है तो बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्लास के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी बताते हैं. वी विल पुट आउट अ फ्लायर, वी विल ट्राई टू यूज आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो. सो प्रीवियसली 3 साल पहले हम लोग क्लिनिकल लर्निंग सीरीज बोल के एक चालू किए थे, उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास, तो हम लोग वहां पे भी डालेंगे. आपके बैच ग्रुप्स में भी डालना. वी इनवाइट मोर एंड मोर पीपल टू ज्वाइन, बिकॉज आई फील देर इज अ नीड फॉर ऑल दिस डिस्कशंस, स्पेशली केस बेस्ड. हम लोग केस बेस्ड डिस्कशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, especially the ones we do as we do the bedside discussion, वैसे ही हम लोग करेंगे. We are requesting senior physicians to join the platform so that थोड़ा सा वो एग्जाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों ठीक से आ सकता है. तो आप अपने बैचमेट्स को और फ्रेंड्स को मोटिवेट करो, जो लोग आ रहे हो रेगुलरली आओ, सो दैट आपके ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. ठीक है.
आपको बीच में भी कुछ डाउट आता है, यू कैन जस्ट डायरेक्ट मैसेज मी, मैं थोड़ा पढ़ के फिर आपको बताते जाऊंगा। और आप लोग भी थोड़ा क्रॉस चेक करना, क्योंकि मेरा भी नॉलेज परफेक्ट नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा सिखाते रहेंगे। ओके। अदरवाइज थैंक यू मैथिली, इट वाज रियली गुड। कुछ। थैंक यू श्री। तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट पार्ट और एसीएस दोनों को कंबाइन कर लेंगे और थोड़ा हाँ हाँ। जल्दी कर लेंगे। यस। एसीएस का ऐसा है कि एसीएस विल बी फोकस्ड ऑन सिम्टम्स एंड ईसीजी। अनस्टेबल एसीएस के बारे में मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि कार्डियक आईसीयू में एग्जैक्टली हम कैसे मैनेज करते हैं, आइनोट्रॉप्स क्या देते हैं, पल्मोनरी एडिमा आता है तो क्या करते हैं, वगैरह वगैरह हम बात करेंगे। एंड थ्रोम्बोलिसिस के बारे में, एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एंड फिर सीधा तुम ड्रग्स के बारे में बात करो। पीटीसीए पे वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट नोट, वी डोंट नीड इट इन मच डिटेल, छोटा सा नोट हम यस उसमें डाल देंगे। इफ यू आर हैविंग, इफ यू चेक इन द प्रीवियस एग्जाम पेपर्स, आपको पीटीसीए पे सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पूछा है, देन वी विल गो इन डिटेल, अदरवाइज वी विल नॉट गो इन मच डिटेल। ठीक है। ठीक है ठीक है। यस चलेगा। यस ठीक है। बाय बाय। यस। बाय बाय, इट वाज अ ग्रेट सेशन, थैंक यू श्री, थैंक यू वेरी मच। ओके। वेलकम वेलकम मुस्लिम। बाय। बाय बाय।